Assalamu alaikum. Good morning. Thank you very much for joining us for the very first part of this exciting new series that we bring you as part of our Gear Up initiative. I hope you're having a great day. We are most probably all are fasting, so we are low on energy, but we are very high on the agenda that we have for today. So we look forward to an exciting presentation by Mr. Asad Malik. My name is Rashid Khan, and just before we actually begin the session, we'll just do a little audio sound check. If you can hear me properly, please type yes so we can begin the session. You have to write in the chat box if you're able to hear us all right. Great. So we are getting all the positive responses. Thank you very much. So this is a life-changing series of professional development workshops, which will be delivered by Asad Mahmood Malik. Asad is the business development manager, and he's based out of Peshawar. So I hope, I heard it was raining in Peshawar a couple of days back. Not sure how's the weather there now, but he looks very energetic, and I hope the session will be great. So if you have any questions related to professional development, you can also send us your questions, and we will pick these questions at the end of the session after he's done with the presentation. We will be we have another very important panelist. He will be assisting Asad just in case technology हमसे बेवफाई करती है, so he will take over and will take the place of Asad Malik and will continue the presentation, and the show would go on. So we have Muhammad Shahid, who is also from Peshawar. Muhammad Shahid, please say hello to all our audiences so they can be familiarized with your voice. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Muhammad Shahid. So Muhammad Shahid will also be taking your questions at the end, so you can start sending us your questions. And I encourage you to very attentively attend this session. It has very key tips for your professional development. So now, in the best interest of time and without further ado, I'll hand over microphone to Asad Malik. Over to you, Asad. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of the dear students, our affiliates, our respective members, fellow members, and our prestigious employees. A very warm welcome to today's session. आज का basically जो session है, that is very important. Or if we talk about the complete journey from student to becoming an affiliate to becoming a member to throughout जो आपकी एक life journey है, एक professional journey से लेकर आपका एक personal side जो आपकी professional journey में भी reflect होती है, all together इस सब के अंदर बहुत important role है कि हम अपनी life में किस तरीके से opportunities को channelize करते हैं और किस तरीके से we bring them in the spotlight and how better we cater along with the overall scenario ecosystem हमारे इर्द गिर्द create होने वाले challenges. So for me this picture in front of you is very close to my heart. I believe के जब कभी भी हम कहीं पर भी whether we are working in the workplace पे होते हैं या हम जब स्टूडेंट होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या जब हम बिल्कुल अपने शुरू के ट्रेनिंग डेज में होते हैं या मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं या सीनियर कहीं पर भी होते हैं, the opportunity is something जो अपनी फेस या अपनी शक्ल मुख्तलिफ तरीके से इख्तियार करके आपके सामने आती रहती है. And today we are here actually to talk about it, the opportunities. The first thing which crossed my mind is के basically जहाँ पर हम stuck होते हैं, और that is के how to basically create opportunities. Sometimes they are there in front of us and हम उनको कभी देख नहीं पाते, या किस तरह से चैनलाइज करना है, या किस तरह से उसको लीवरेज लेके या किसी भी चीज को जो हमारे इर्द गिर्द है हमारे इकोसिस्टम में उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है. And it's completely sometimes
इतना एक पैनिक में हम चले जाते हैं। अगर हम बात करें इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन की, कोविड-19 की अगर हम बात करें, और इस सिचुएशन के अंदर जहां पर बहुत सारे लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बहुत सारी चीजें एक रिस्ट्रिक्शन वाली साइड पर आ गई है, एंड वी ऑल आर रिस्ट्रिक्टेड टू आवर होम्स। इस सारी सिचुएशन के अंदर भी हाउ हाउ दी अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरह से हम उनको प्रोहे कार ला सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस। सो जस्ट इमेजिन, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सब, या फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स एक सहरा में गुम हो जाता है और उसको, और वो चले जा रहा है और वो अपना मंजिल को खो चुका है, और उस सफर के अंदर वो कोई सहरा में गुम हो गया और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एट द एंड वो इस हद तक नौयत तक पहुंच गया है कि अब जो थर्स्ट है उसने भी अपनी शिद्दत पकड़ना इख्तियार कर ली है। सो व्हाट हैपेंस? सो यू आर नाउ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर, और यही साइकोलॉजिकली रिफ्लेक्ट होता है जब कभी कहीं पर भी हम होते हैं अपनी लाइफ में और हम एक हद से आके स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मेंबर्स हैं वो मिडिल मैनेजमेंट में है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं, सो बिल्कुल अल्टीमेटली यही सिचुएशन प्रिवेल होती है जहां यू आर लुकिंग फॉर इवन अ लिटिल ग्लास ऑफ वाटर as opportunity in front of you, ताकि you take leverage out of it and you can see ahead. So उन्हीं छोटी छोटे those small glasses of water are actually the processes which are very important, or the staircases to your destination. And the staircases to your destination is actually the opportunity itself. So today we will talk about that staircase that takes you to your destination. And यही जो staircase है is ultimately defines what opportunities are. So today we will be talking about how you can enable yourself in the current ecosystem, or the factors around you, and can basically convert them into opportunities. So the beginning is very important. So today we are going to talk about how to create opportunities and the beginning of every beginning. For example, when we are students, our professors, our teachers usually talk about always look for the original source. So when we talk about the original source, so it's basically from the very first day. So when you are a student, before becoming a student, your parents are there as mentors. So it starts from the very beginning. The opportunities comes to you from the very first day. So आए इस पर हम आज थोड़ा सा बात करते हैं. So सबसे पहले we usually believe कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुद से चल कर आएंगी और आकर एक दिन अचानक से हमारा दरवाजा जो है वो नॉक करेंगी और हमें बताएंगी हे वी आर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। या हम जब अपने एग्जाम्स कंप्लीट कर लेंगे और हम जो है आर्टिकलशिप में जाएंगे तो वहां पर खुद से हम होल हार्टेडली अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खुद से चल कर आएंगी, बट दिस इज नॉट केस। स्पेशली इस करंट सिचुएशन के अंदर जहां पर बहुत सारी चीजें एक अपने मोहतात रवैये में चली गई हैं, इस सारे प्रोसेस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अपॉर्चुनिटीज कभी खुद से चलकर आपके पास नहीं आती हैं। और अगर खुद से चलकर नहीं आती हैं, अगर आप सर्च करते हैं, द बेस्ट वे इज कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को, हम अपने आप को उस सारे थॉट प्रोसेस के साथ वेल इक्विप्ड कर लें जिसके थ्रू वी इनेबल आवरसेल्व्स actually where we start creating opportunities at our own end, at खुद से अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। हम उस सहरा में जहां पर कुछ नहीं है, हमारे अंदर वो एबिलिटी क्रिएट हो जाए जहां पर हम वहां पर खुद अपनी एबिलिटी से जो है पानी तलाश कर सकें, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें और एक पूरा शहर क्रिएट कर सकें, अपनी एक पूरे एम्पायर क्रिएट कर सकें उस वीरान सहरा में जहां पर एक सिंगल रिसोर्स भी नहीं होती। सो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट।
But to create opportunities, this is very important for us that कि हम ये realize करें या ये understand करें कि who you are. This is very important. Before jumping into or going for any road, कोई भी सफर इख्तियार करने से पहले ये बहुत important है, कोई भी destination की तरफ निकलने से पहले to understand who you are. So इसके लिए बहुत important है कि आप अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें. Because if you don't know who you are, then it's going to take you nowhere. So let's see what are those important factors which are important when the point is to know yourself. So first is what drives you. Then personality. Get to know your personality. What are you good at? Your core values. आपकी इखलाकी कदरें. जो कोर वैल्यूज हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम तो अभी एज अ पर्सनालिटी, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एफिलिएट, एज अ मेंबर, एज वर्किंग समवेयर, एज अ प्रोफेशनल एट सम एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस, वहाँ पर जो हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का एक कल्चर होता है, वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज होती हैं. तो जो कल्चर है, जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, जो पॉलिसीज हैं, वो जिस चीज से डराइव्ड होती हैं वो आपकी वैल्यूज होती हैं. लाइकवाइज हम भी अपनी लाइफ में जो भी अपना करियर पाथ, पैशन, इंटरेस्ट कुछ भी बिल्ड करते हैं उसके पीछे हमारी कोर वैल्यूज होती हैं, उसको बैक करते हैं. सो लेट्स dissect a little bit more what it actually we mean here by what drives you. Okay, simple and easy. Write down a list of things that really drive you forward. It could be your competitive edge. Do this activity kabhi aapko waqt mile, fursat nikalein. Just write down the list of those activities jo aapko try karti hain forward. Think about what motivates you to act in certain ways. Is it financial? Is it to with your compassion? Or is it a personal desire to be the best? It could be anything. And one of the most important thing is that it's not important that it is something which is there in your past और आप वहां से aspiration लेने की कोशिश करें. It is something जो आपने can be something जो आपने शायद अपने past में पहले कभी try नहीं की. So go for something, some new projects, some new activities. So this is very important. So anything which drives you, bring that at front and place it on your plate and try to think around those lines that what drives you. So now about personality. Personality is very important. So get to know your personality, who you are as a personality. It's a simple quick activity. You simply need to define 5 to 10 traits. What 5 to 10 traits do I feel define me? Think about those traits, write down in front of you, and just reflect on yourself. And also ask any of your good colleague or friend or whosoever who is close to you that he can also do the same thing for you, that he write some good 5 to 10 words or sentences or a paragraph about you, so that which reflects on your personality. Which role do I play in my group of friends? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जब आप अपने colleagues के साथ होते हैं, whether on the lunch or during the meetings or during some light conversations. So who you are, get to know. Are you, for example, when I used to be in my student days, university days, I actually remember that wherever we all uh, used to plan for a trip, for a lunch or anything, the most important thing is I used to coordinate with everyone. So everyone used to call me coordinator. Where is the coordinator? Where is the coordinator of our group? So I used to coordinate. So there was a very sound impression that if anything needs to be coordinated among these 100 people or 80 people, he's the right person to talk with. So that is something which reflects about your personality. How would a stranger see me?
It's all about your personality and the impressions you create out of it. For example, someone, if you are appearing in interview for and आपकी उस शख्स से जो आपका इंटरव्यू ले रहा है पहले मुलाकात नहीं है, so the moment you are entering is creating an impression. So बहुत important है कि how the stranger sees you. What do I want others to think about me? This is also very important कि आप क्या impression चाहते हैं कि अगला आपसे perceive करे, carry करे, और you start working on it. Okay, what are you good at? What are your strengths? What are your strong play areas जहां पर रहकर आप play करना चाहते हैं, और आप अपनी reflection जो है अपने जहां पर आप जिन एरियाज में strong है उनके थ्रू create करना चाहते हैं. There are quick points I'll go through. Knowing what you do well forms a large part of your identity. So ask yourselves what makes you your best self. And if you're really struggling, ask a close friend or loved one for some help. Remember that this activity is meant to be positive. Think about the things that people admire in you, such as being a good friend, having a great singing voice even, or being reliable and trustworthy. And believe you me, these all features are not something which have to do with only your personal life. They have a very strong reflection across your professional side as well. Because wherever you go, you take along your personality and these important traits of your personality. Knowing yourself comes in different forms for everyone. So don't assume that your answer has to be related to your work or your wealth or only to your precision के साथ जो career आप pursue करना चाहते हैं. It can come from you, any part of you. Okay, core values जिसकी हमने बात की थी. These are very important. All the important organizations, big institutions around you have the very core thing जिसको हम nucleus भी कह सकते हैं, and those are the core values. Even ACCA today in front of you, more than 100 years old body with all the good legacy, with all the fine excellence competency framework जो आपके सामने लेकर आता है, उसको भी जो back करते हैं, those are the core values. इसी तरह से किसी भी एक प्रॉपर कंप्लीट पर्सनालिटी को अपने इर्द गिर्द चैनल अपॉर्चुनिटीज को चैनलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले अपने ऊपर काम करे और उस पे सबसे पहले अपने अंदर अपनी उन वैल्यूज को जांचे और परखे कि वो कौन सी कोर वैल्यूज हैं फिर जो उसको रिफ्लेक्ट कर दी हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Most of the cases, did your parents model them for you? Or did your values evolve in opposition to what you saw when you were going? So you were seeing things around you, your environment, the people around you, your parents, your friends, your mentors, your colleagues, maybe your boss, subordinate. These all people are actually helping you to evolve your core value systems. Psychologists often suggest that most of us have around 8 core values, that these play the biggest role in motivating our choices at work, at home, and in everyday life. So मैंने अपने end से कुछ core values shortlist की हैं, अपने आप को ज़हन में रखते हुए आप अपने हिसाब से just go through this activity घर में. It will not take much of your time. Just take a pen in the page and write down कि वो कौन सी core values हैं जो आपको reflect करती हैं, आपकी personality को present करती हैं. So for me, for example, I've written here reliable, committed, consistent, innovative, honest, optimist, respectful, courageous, patriot,
service to others, and environmentalist. And your core values, आपकी core values ऐसी होनी चाहिए जो well integrated हो आपके पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करे। उसमें आपकी पर्सनल साइड भी हो, उसमें आपकी प्रोफेशनल साइड भी हो, और उसके साथ साथ आपके, जैसे मैंने यहाँ पे पैट्रियट लिखा है, आपके व्यू पॉइंट्स भी हो। वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो दैट कुड बी एनीथिंग, बट आपको एंटायरिटी में एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपके बारे में क्रिएट। So when we are actually to create opportunities, सबसे पहले हमने बात की we don't need to wait for opportunities to come and knock our door. We need to create them. So to create those opportunities, it's important first of all कि हम अपने आप को जाने. We need to know ourselves. And after that, the other important thing is that now when you know yourself, you need to sell yourself. And this is the most important part. I've come across number of people in my life, during networking, in my classroom, in the workplace I work, anywhere where I have interacted with number of people in my life. And that this is very important कि लोग बहुत बहुत काबिल होते हैं, बहुत skillful होते हैं, technically बहुत strong होते हैं, लेकिन most of the time होता ये है कि वो अपनी उन abilities को reflect नहीं कर पाते हैं, उनको sell नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी वो उनकी पर्सनल साइड भी हो सकती है, उनकी प्रोफेशनल साइड भी हो सकती है, क्योंकि जब आप may be any of your close friend or your father, mother or your brother or your best friend knows कि आप इतने brilliant हैं इस particular subject में, but in general to the people around you while you are networking, especially खास तौर पे today we are in the world of networking का दौर है, और हम ये बड़ी एक बात मशहूर है that your network is equal to your net worth. So it's very important that we should know that how to sell ourselves. So first thing comes first. So I've shortlisted few of the important pointers यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत important है जब कभी भी when we are out to sell ourselves. So first thing first, and that is our life philosophy and objectivity. Whenever we interact, whenever we present ourselves, maybe in as a speaker in front of a crowd, in an interview, or during some regular coordinations as part of some project, it's very important to reflect on how what's our life philosophy. In अगर आप आज के दौर में जो आप CVs देखें, आप resumes देखें, तो one important thing जो कि objective statement के साथ साथ mention होती है, या the new normal that people also mention life philosophy. For example, my philosophy all my life has been the pursuit of excellence. ये one liner होती है, और ये वन लाइनर ऐसे स्ट्रॉन्ग वन लाइनर होती है जो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में बात करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हवाले से who you are in the last 30 years and where, or 20 years of your life, and where you want to be in the upcoming 10 years, what's your passion, what's your vision, that all is reflected through this one line, and that is your life philosophy, and that covers all perspectives about your personality. The other important thing is the objective statement, especially addressing to the students right now in the session and affiliates, and also to the members who are looking for growth, further growth in their careers. And this is very important. Most of the time, the objective statements we articulate are very uh, machine in machine language actually.
very robotic. So it's very important कि आपकी जो हमने बात की है नो योर सेल्फ की और उसके अंदर आप व्हाट ड्राइव्स यू की बात की है, गेट टू नो योर आपके पैशन वाली साइड, व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, वो सारा वो सारा जो थॉट प्रोसेस है, स्पेशली योर द पैशनेट साइड, शुड बी रिफ्लेक्टिंग इन योर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. सो हियर मेरे सामने भी एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. I'm looking for a fixer-upper with a solid foundation. I'm willing to tear down walls, build bridges, and light fires, and I have great experience, lots of energy, a bit of that vision thing, and I'm not afraid to start from the beginning. The word beginning is there. So it's और ये अगर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है one of the very known personalities and one of my favorite, Steve Jobs. See, so how great people around us put their objective statements in 3 to 4 liners. So putting your objective statement with all of yourself is very important, apart from your qualification, apart from जो आप कोई भी चीजें अपनी लाइफ में टेक्निकली साथ साथ परस्यू कर रहे होते हैं, apart from where are you working, it's completely about you. Okay. The other important thing is your competency framework. So wherever you are working, you need to sell your competency framework. For example, मैंने यहाँ पर ACC का competency framework आपके लिए present किया है. This is very important. To become, for example, to become, every one of you foresees to become a fine professional accountant. And to become a fine professional accountant, you need to know what is the competency framework of your accountancy body. We have in front of us for ACCA, which talks about, core talks about the ethics and professionalism, strategy, innovation, leadership and management, corporate and business reporting, governance, risk and control, financial management, management accounting, taxation, audit and assurance, advisory and consultancy. So all are actually you are जो आप एग्जाम्स जो आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, जो आप मेहनत करके एग्जाम्स देते हैं और पास करते हैं, वो सारा थॉट प्रोसेस बेसिकली you need to bring that within your body language, and you need to reflect this competency framework through your actions, through your performance, while whether you are in the interview, and it goes along to complete journey. When even you are a student, when you become affiliate, when you become even member, even when you become fellow member, these competency frameworks goes all with you all your life. The third important thing is selling the idea, selling job interview. For example, you want to work on some idea, or you want to work on some business. So it's very important that you should know how to sell it. And to sell idea, it's very important to be creative about it, to put a proper roadmap, thinking pattern, and also a complete design layout to your idea, so that to whom who आप जिसको भी present कर रहे हैं, whether it's the investor in front of you, whether you want to partner with someone, it's very important to best reflect on your idea, and that is only possible when you sell it smartly. The other is, especially when our students, affiliates, and also members are going through all of their career, keep on going all of through their career through interviews. And I've just written one important point here around selling, and it's very important when you enter into the interview room. Now you are there actually to sell your complete profile. So very interesting जो हम usually
आपने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी देखे होंगे, इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत ज्यादा आपने सुना भी होगा, एंड दैट इज सेल मी दिस वेल, टिप्स फॉर आंसरिंग एट अ जॉब इंटरव्यू. फॉर एग्जांपल, be positive and energetic, emphasize features of value by asking questions. I'm so excited to tell you about how this pen can help you. So here he's trying to sell the pen. So actually the philosophy around selling me a pen or sell me this pen is actually how actually you are going to sell whatsoever you have written in your CV or resume. Okay. Fourth important part in selling yourself is meetings and negotiations. This is very important. To actually seize the opportunities in your life, it's very important कि to understand जो अब तक हमने तीन points की बात की है, और ये बहुत important है कि आप इन सब pointers पर काम करें. और इसमें one of the important point is when you are actually in the meetings. Because when you are in the meetings and you are speaking, so you can be the center point of attention for all of your colleagues or professionals around you, or if you are somewhere for networking and you have started speaking about some particular subject or thing, and people are now looking at you, and or you're working on some project or you are up to presentation. So it can be different situations and scenarios. For example, email, an agenda, some basic tips just to prepare your mind, just for, because this is very important. When you are out to sell something, it's very important that you go prepared with all the relevant equipped knowledge required. So email and agenda 24 hours in advance. Some basics etiquettes also comes along, like no interrupting, no smartphones, phones. Then the focus is very important. Stay on topic, be brief and concise, because when you drag, the people all around you start losing at their attentions, because there is so much happening on all along the day. So it's very important that you stay brief and concise. Then share all the relevant data. Also bring paper and a pen, so that whatever is the takeaway, especially when you are in the meetings, so you go along with all the required tools. Challenge ideas rather than people. Disagree without being disagreeable. This is very important. So selling phenomena comes at our faces with very different dimensions. So these are the different dimensions. No side conversations or comments. Start and end on time. Arrive 5 minutes early. These all points are actually playing their role in your ultimate selling. And the other important part is actually negotiation. When you are actually out for some meeting with some client, आप किसी client को मिलने जा रहे हैं, आप even interview में हैं, और अब actually आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर now इस चीज पर बात हो रही है कि what's going to be your package, for example, or what's going to be the particular understanding between the parties. So negotiation skill is very important. और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू में काम आएगा, ये आपकी डेली की डिस्कशंस में, प्रेजेंटेशंस में, डेली की कॉन्वर्सेशंस में, it will help you everywhere. So this is very important. So and it's a complete, अगर हम इसका एक collective, इसमें कौन कौन से points important हैं, you need to be tactical, you need to have all the relevant negotiation skills. It also revolves around the MOUs, और कोई भी हम प्रोजेक्ट जो है ऑन बोर्ड करते हैं,
or these all lead actually to your particular goal or what you are looking for. इसमें हम further आगे Q&A session में भी बात करेंगे. Okay. Selling with confidence is very important because confidence is something जिसके ऊपर आप अपनी सारी फीचर्स जो हमने अब तक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे इसको you dress your all thought process, all your content with one important thing, and that is confidence. So dress up all of your thought process basically physically and mentally with confidence. Appearing confident can help us get on better in our lives. Studies show करती हैं कि self confidence is more important for career success than talent. Individuals who appear more confident achieve a higher social status than their peers. The third one is very interesting. A simple aid like giving men any perfume improved their confidence enough to be rated as visibly more attractive in photographs. For example, this was very interesting for me. Okay, just to move towards the beginning side of the opportunities, uh, the great philosopher, poet of our nation, Allama Iqbal said, "ना तू ज़मीं के लिए है, ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए. You are neither for the earth nor for the heaven. The world is for you, and not you for the world." एक ultimate key takeaway है इस शेर से, और वो ये है कि everything you see around you is an opportunity. Okay, so far we have talked about we don't need to wait for the opportunities, we have to create it. And to create the opportunities, we need to know ourselves first. And when we know ourselves, it's very important that we know how to sell ourselves. And now actually we are at the beginning part of the concept of how actually to create the opportunities. Okay. Before the beginning part or at the beginning part, it's very important for you to understand that who packs your parachute. There's a very known story I'll share with you of a plane fighter there, Charlie Plum, US Armed Forces say, and Vietnam की war के अंदर he had around 75 missions, and he had 74 successful missions, and on the 75th missions, his plane was shot down. He was having a dinner in some restaurant in Kansas, और a waiter आते हैं और उनसे बात करते हैं और कहते हैं, okay, so you are Charlie Plum, the plane fighter. Your plane was shot down on the 75th mission, और आपको कैदी बना लिया गया था 5 साल के लिए, and after 5 years you come back to. बड़ा सरप्राइज होता है चार्ली प्लम के how he knows everything about me. So he asked him, how do you know all of these details about me? So the waiter उसको जवाब देते हैं, वो कहता है कि cause I was your sailor on that day. जिस दिन आपका your plane was shot down, I was the one who actually packed your parachute. So it's very important that we know कि हमारी lives में वो कौन लोग हैं, और वो हमेशा होते हैं. When we are even students, जब हम affiliate बनते हैं, जब हम members बनते हैं, in the form of our practical experience supervisors, our senior ACCM members, our colleagues around us, our well-wishers, our friends, ये वो लोग होते हैं who are actually investing in your growth. So when you are out actually to foresee opportunities around you, it's very important to understand who are actually those people who have invested in your growth.
एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपॉर्चुनिटीज हम तलाश कर रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं वो बिल्कुल इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द या इन्हीं लोगों के थॉट प्रोसेसेस के थ्रू हम वहां तक पहुंचते हैं. ओके, यूजली किड्स आर, आपने देखा होगा कि यंग एज में, एट वेरी यंग एज, जब बच्चे होते हैं या यूजली जो किड्स होते हैं, दे आर वेरी, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है टू नो थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर भी जो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है उसको हम हमेशा जिंदा रखें. When we are students, especially students, when we become affiliates, we are out for the training jobs, internships, articleships, when we are becoming a member, and even aspiring for the senior most positions on for the leadership positions. It's very important, and it's very important because this is something जो कि हमेशा देखी जाती है, and that is your curiosity part, apart from your qualification, apart from your technical side. And you need to keep on satisfying your curiosity. For example, your curiosity says that you should travel, then you should travel, because when you travel you get to know and learn a lot. Most of the entrepreneurs especially, या जो लोग अपने businesses करते हैं, या आप usually देखेंगे जो senior positions पर लोग बैठे होते हैं, chief financial officers हैं, टीम लीड्स हैं, फर्म्स के पार्टनर्स हैं, सीईओज हैं, उनके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वो हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी पार्ट को, अपनी एपेटाइट को हमेशा सेटिस्फाइड रखते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैवलर्स. सो व्हाटसोएवर इट यू वांट टू फिल्म समथिंग, गो फॉर इट, बट keep satisfying your curiosity. And most of the time, 90% of the time, जो अपॉर्चुनिटीज ओरिजिनेट होती हैं या हम जिन पर काम कर रहे होते हैं अपनी जिंदगियों में, वो हमेशा हमारी क्यूरियोसिटी से आती हैं. Okay, so we talked about the curiosity part. Now it's very important, and most, और जहां पर हम रह जाते हैं, we always talk about things we want to do in our lives. We always dream about number of things, that this is something I want to do. इस सर्टन एज के अंदर मैं यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ अपने करियर में, मैं अपने लाइफ में पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ. लेकिन हम ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशंस की हद तक रखते हैं, और वहां पर आके वी एक्चुअली पुट अ फुल स्टॉप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर एक गो गेटर एबिलिटी होनी चाहिए. और बेसिकली वेन एवर वी एक्चुअली think on initiative के now we should initiate, now we should take that first step. So हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल एक क्लिफ के एंड पर खड़े हुए हैं. और इफ यू हैव डन, अगर आपने कभी भी पास्ट में क्लिफ डाइविंग की है, या जिन लोगों ने क्लिफ डाइविंग करते हैं, कहते हैं कि व्हेन एक्चुअली यू आर अबाउट टू जंप, सो एकदम से आपके ऊपर एक फियर प्रिवेल करता है और वो आपको रोकता है, और वो आपकी सारे उस बिलीफ को, उस थॉट प्रोसेस को किल करने की कोशिश करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर की गो गेटर एबिलिटी के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करें. There's a very old proverb, 15th century old proverb, that good things come to those who wait. Now we are talking about new normal, the recent day, and let's replace this wait word with good things come to those who actually create. So when you believe you have all that personality part, you know yourself well, you have that all curiosity part with you. हमने जितने भी पीछे points सारे in detail discuss किए हैं, our objectivity, our life philosophy, our competency framework, hold them all together firmly within your body language and try to create something, because जो वेट वाली फिलोसफी है, that leads you to nowhere.
in concept of creating opportunities. Okay, this is very important. All of our life says like a puzzle in front of us. Okay, now what's next? Okay, I was a student, I got good trainee job. Now, how to actually grow myself further? How to make myself part of this organization? Middle management का मैं कैसे बनूं? Okay, now I am the part of the middle management. How to further grow myself? How I can be the CEO of the company? It's very important. और इस पजल को सॉल्व करने में या अपॉर्चुनिटीज को हमेशा आप तक या आपको उस अपॉर्चुनिटी तक लेकर जाने में जो लोग हेल्प करते हैं are actually the people around you, those people around you who are great thinkers, who are intellectually strong. So connect with thinkers, people who inspire you, allows you to open up your mind to things you usually don't hear about. Otherwise, normal routine में you will not hear such pointers. और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनकी सोबत में बैठते हैं कंपनी में, so lot of points comes, ऐसे golden points आपको मिलते हैं जो कहते हैं यार इस डायरेक्शन में तो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था. ओके, इसी थॉट प्रोसेस को, इसी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और मैं कुछ important sayings आपके सामने लेकर आया हूँ. Seneca, who was the Roman philosopher, statesman and dramatist, बड़ी एक मशहूर कहावत है, and that is के luck is what happens when preparation meets opportunity. Preparation meets opportunity. We always think okay, you need to be lucky to have, आप lucky हैं कि आपको इतनी सारी opportunities मिल जाती हैं. ऐसा नहीं होता. It's not actually luck, आप खुद बनाते हैं और वो आप बनाते हैं by prepare yourself. जो अभी तक हमने पीछे points discuss किए हैं, खास तौर पे competency framework, हमारी core values, उन सबको ज़हन में रखते हुए आप इकट्ठे intact करें और prepare करें on the idea you want to work on. Knowledge required, the relevant skills required for it, the relevant negotiations required for it, all get them together and prepare yourself, and opportunity will ultimately come itself and meet you at your doorstep. Another important saying, American polymath and one of the founding fathers of the US, failing to prepare is preparing to fail. I also remember one of our teacher was our economy teacher. एक बार आए और उन्होंने बोर्ड के ऊपर ये लिख दी स्टेटमेंट, फेल टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल. और मैं यही सोचता रहा काफी अरसे तक कि he being an economist has written something which has nothing to do with it, with his subject. But now I've realized actually when actually you fail to prepare something is actually you're preparing to fail. Okay, so now we have all the beginning part with us, that how to begin yourself for or to, for the better for the better enabling to the opportunities around you. So when the opportunities, you start seeing opportunities, most of the time you start seeing number of opportunities in front of you. Okay, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये opportunity भी prevail कर सकता हूँ. So I have number of opportunities in front of me. So what you're calling it number of opportunities, आपको कैसा पता चले कि वो कौन सी opportunity है which is meant for me or I am meant for that opportunity. Okay. इस सवाल का जवाब देने के लिए it's very important that you need to act like a scientist who comes to solution not on the first day, but they experiment with something closest. For example, अभी हम current situation की example लेते हैं of this current pandemic situation, COVID-19.
I think many think tanks around the world are working on the vaccine. So is vaccine काफी time हो चुका है, vaccine नहीं है. It means the scientists are going through a proper experimental thought process, and with that experimental thought process they will come to the solution. So exactly when we are looking to seize the precisely relevant to the point opportunity which is meant for us, it's important that we start analyzing those opportunities just like a scientist and start experimenting with the close something which is closest. Okay, so the other thing which is important when we are actually precising or we are actually shortlisting the opportunities for us, it's very important that we start saying that what's urgent and what's important. I've just made a graph, do, plan, delegate, and eliminate. So things which are important as well as urgent comes in the do part, but important, not urgent, you can plan them, and not important and urgent needs to be delegated, and the last one, not urgent and not important, is to be eliminated. And the when we talk about urgent and important, it's important that we start seeing how actually we plan our days. So there are 6 steps for planning our days. Write everything down, check your calendar the day before, book similar tasks together, plan, postpone tasks according to their priority, revise your performance, make adjustments when necessary. Okay, this is very interesting. Usually हम जब किसी अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं और उस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, so most of the time हम अपने आप को एक बड़े लीनियर, एक रिजिड, एक फिक्स माइंडसेट के साथ लेकर चलते हैं और हम समझते हैं कि टू स्टे फोकस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे वेरी लीनियर और पर्टिनेंट विद दिस रोड मैप, एंड जो उसके मल्टीपल रूट्स होते हैं उसी पर्टिकुलर गोल की तरफ जाने के लिए उनको हम क्लोज डाउन कर देते हैं. इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमें मिलती है व्हेन वी सी द क्रॉलिंग बेबीज. जब बच्चे क्रॉल करते हैं तो जब उनके सामने कोई आता है, दीवार आती है, तो बच्चे क्रॉल करना बंद नहीं कर देते, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. अगर 4 लोग खड़े हुए भी हैं तो वो बच्चे इवन दे मेक देयर वे बिटवीन लेग्स एज वेल. तो उनके सामने अगर कोई आ रहा है हर्डल, so they change their way. So it's important that we keep on moving ourselves instead of that, okay, this was our thought process and now there is a hurdle and we have nowhere to go. It's from very interesting movie, Yes Man, I believe. आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी. Very known actor from the Hollywood, Jim Carrey. Very known movie, Yes Man. So, कुछ learnings हैं Yes Man मूवी से. I'll share with you कि initially इसके character में ये दिखाते हैं कि most of the things को वो अपनी life में no बोलता है, फिर वो एक motivational session attend करता है और उसके बाद उसको थॉट प्रोसेस चेंज होता है और वो बहुत सारी चीजों में एक फिलोसफी अपनी चेंज कर लेता है, फ्रेमवर्क, और वो ही स्टार्ट सेइंग यस टू एवरीथिंग जो उसके सामने आती है, और अचानक उसकी लाइफ बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है. और बेहतर होते होते उसका कर्व बड़ा अच्छा मूव कर रहा होता है और अचानक से फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर वो चीजों को यस बोलता है और उसके लिए फेवरेबल नहीं रहती. देन ही रियलाइज्ड कि एक्चुअली इट्स अ मिक्स of where to say yes and where to say no. And if you go through the lives of all the successful people, so you will see कि उनका जो initial curve होगा, that was most of the time as a yes man there. और जैसे जैसे उन्होंने अपने systems को, अपनी organizations को बड़ा किया और grow किया, so they started using the framework of a mix of yes and no. So that's very important to see this perspective. Okay, we believe that strike while the iron is hot, but the new normal is do not wait to strike till the iron is hot.
but make it hot by striking. That you need to keep on striking until the iron gets hot, and that's how you bring on the opportunity in your plate. Few good examples जो अभी हमने बात की है, that you need to keep on striking. J.K. Rowling's 12 से 13 बार different publishers के सामने लेकर गई अपनी बुक को, और वो रिजेक्ट हुई, और जब वो एक्सेप्ट हुई, so there was no looking back. Michael Jordan, one of the best basketball players from the sports industry, and more than, I was going through the stats, more than 2,000 missed shots. And the last one from the very great movie of Hollywood, The Rocky, the script got rejected by number of known directors, and when it got accepted, तो उसमें भी एक शर्त रखी गई, और पहले वो शर्त ये थी that you are not good looking, but he didn't lose hope and he kept on struggling, and now it's in front of you. He's very known. You just go on the Google and type Sylvester Stallone and you will see the bulk of movies he has done in the last few decades. Okay, this is very important. When we are actually working on some opportunities, it's very important how we position ourselves. It's very important. There are challenges going to be, हमारे इर्द गिर्द challenges भी होंगे, हमारे इर्द गिर्द situations change भी होंगी, political situations change होने से भी आपके scenarios change होते हैं. मिसाल के तौर पे अभी इस COVID-19 की वजह से complete world has been locked down, so ultimately completely उसने सारा scenario change कर दिया. Many people have lost their jobs. So it's very important कि आपके इर्द गिर्द जो फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जो आप पे, आपकी शख्सियत पे, पर्सनालिटी पे, आपके करियर पे, आपकी ग्रोथ पे असर रखते हैं, उस सारे मामलात के अंदर आप अपने आप को कैसे अलोकेट करते हैं. एंड वन ऑफ वेरी गुड एग्जांपल इज व्हेन यू सी द प्लांट्स, और जब आप पौधों को या प्लांट्स को देखते हैं जो शेड्स में लगे होते हैं या जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इफ यू एक्सपोज दोज प्लांट्स टू द सनलाइट, टू द स्टॉर्मी रेन्स, जो बाहर की सारी कंडीशंस हैं, अगर आप उसमें करें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डेड प्लांट्स बन जाए. बट अगर आप देखें ऐसे प्लांट्स, पौधे जो कि एक्सपोज्ड होते हैं, जो फेस करते हैं सारी चीजों को, उनकी रूट्स स्ट्रांग होती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बहुत सारी जो फैक्टर्स हमारे इर्द गिर्द हैं उससे शाय अवे ना करें, बल्कि उसके अंदर हम अपने आप को आइडियली ऐसी जगह पे एलोकेट करें जहां पर वी आर गेटिंग सम शेड एज वेल, also the some sunlight, and also few storms to us, so that we stay realistic, we stay close to the reality, close to the real situations, and respond accordingly. Okay, this is very close to my heart. And a picture, a rocky hill in front of you, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. But when you are out to create opportunities, it's very important that we start seeing the hill up on that, we start seeing our city up on that rocky hill when nothing is there. You start visualizing it. You start imagining that there is a complete city there, and you believe that one day that city will be there up on that rocky hill. And it's very important, because when you are, especially when you're a student, you aspire that you want to be a CEO. You aspire कि आप मिडिल मैनेजमेंट से जंप लेकर आगे ग्रोथ लेना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में जो भी आपका ड्रीम आप करना चाहते हैं, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन. Before coming on some role, it's very important that you also try to act like one. Not only act, you perform on your job description, but along performing अपनी job description पे perform करने के साथ साथ, if you really aspire to become a CEO,
then start behaving like a CEO. To your extent, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को एक CEO कंसिडर कर लें, लेकिन आप वो सारे अपने अंदर उन सारे परसेप्शंस को जरूर लेकर आए, उन सारे पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करें, या जिस तरीके से एक CEO चीजों को देखता है वो थॉट प्रोसेस अपने अंदर बिल्ड करें एंड स्टार्ट सीइंग योर सिटी अप एट द हिल व्हेन नथिंग इज देयर। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, द पीपल अराउंड यू, colleagues around you, they build a pressure कि it's very irrational, it's very unrealistic, but it's not irrational. You just imagine that you are standing up there on the hill and you believe in that thought process that it's not rational because you know what it can be, but they don't. And that's actually opportunity. The people around you would say it's a wasteland, but it's actually the future empire. People would say free time, but it's actually the launching pad. People would say hopelessness, now meedi, but it's the people, जितने लोग आपको कहेंगे उतनी आपकी reassurance बढ़नी चाहिए. People would say nothing is there, it's blank. Nothing concrete is there, but it's definitely infinity, upgraded and expanded. So it's very important, especially in the current situation we are. और एक वक्त आएगा जब वो जो थॉट प्रोसेस है जिस पर आप बिलीव करते हैं वो डिलीवर हो जाएगा, वो लोगों के सामने टेंजिबली चीज पड़ी होगी. द सिटी विल बी देयर अप एट द हिल एंड देयर विल बी नंबर, और वही सारे लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे थे, दे विल स्टार्ट एक्चुअली appreciating your viewpoints. So there will be a day when they will wonder how you did it, how you made it, what you have a reality today. So throw away ifs and buts and start asking yourself how. So in your world, there are no problems, only opportunities. You just need to have that perspective, your core values. You need to know yourself, your curiosity, your passion, and all of the important features we have discussed in today's session. And when you believe in this, then in your world, there is no end, only new beginnings. Thank you very much. So this is it from my session, G. Shahid, if I may ask you that if we can jump to the questions. And before Shahid jumps to the question section, just to let everyone know that this is the first part of the series. So the sessions will continue. We have 5 more sessions, I believe. That's right, Asad? G. Yeah, so there will be 5 additional sessions which will be delivered. Every session has a different focus, so don't forget to join us for our remainder of the sessions. So over to you, Shahid. If you can please share the questions that we have, and if people have not asked the questions, you can ask now. We have 15 minutes to answer all your questions. Over to you, Shahid. Thank you, Rashid. Thank you very much, Rashid. Really Thank you, appreciate Rashid. all your great support. Thank you, Rashid, and thank you, Asad, for a brief and comprehensive presentation. Let's move on to the question. We have a question from Salman Maqsood. He has actually shared a challenge that he is he's facing a challenge while managing relationship in co-working spaces. So he wants some suggestion that how he can improve his relationship. Okay. Rashid is actually a member or affiliate or a student. Actually, it's a question from Salman Maqsood. I've lost your voice. Asad, can you hear me? Hello. G, I can hear. G. I'm saying that this question is from Salman Maqsood. Okay.
सलमान, आई वुड सजेस्ट कि हमने आज के इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन एक्चुअली ऑन योर थॉट प्रोसेस। यूजुअली ऐसे तब होता है when you reserve your personality, you don't talk about your जो आप यहाँ पे फील करते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, ज्यादा वर्बल हो, ज्यादा इंटरेक्ट करें और ऑप्टिमिज्म साइड पे ज्यादा रहे। एक हमने इसके अंदर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट कि आप कभी भी डिसएग्री करें तो आप डिसएग्री आइडिया से करें, not with the personalities in front of you, or always try to actually help people। और हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम सेल्फ डेवलपमेंट की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम सेल्फलेस डेवलपमेंट की बात नहीं करते। और यूजली इस तरह के चैलेंजेस तब आते हैं जब हम जो है बिल्कुल कंप्लीटली सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। सो सेल्फ डेवलपमेंट से ये होता है यू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे जहां पर आप दूसरे की लाइफ में भी प्रोफेशनली पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप अपार्ट फ्रॉम दैट, अबव फ्रॉम दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी का जो रोल है एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको तो आप परफॉर्म करें ही करें, लेकिन आप उसको बिल्कुल एक रोबोटिक स्टाइल से ना करें। Actually, people around you most of the time gets irritated with the fact when you are completely robotic or just stay on the topic precise and relevant, and you don't put warmth, expression, and some decorative aspects around your conversation. So it's very important कि आप एक harmony create करें अपने इर्द गिर्द job description के इर्द गिर्द, so people start accepting your presence। जी शाहिद। Right. Asad, we have a common question from Sabah Tufail and Tuba Javed. They want to know that you have mentioned a statement that disagree without being disagreeable. So how could it be done? ओके, मोस्ट इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हम डिसएग्रीमेंट अपना ऐसे शो करते हैं जिससे लगता ये है कि हम उस बात से ज्यादा उस पर्सनालिटी से एग्री करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही एक रिफ्लेक्शन दे पाते हैं जहां पर हम कोई भी बात करते हैं तो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो उस स्टेटमेंट से ज्यादा उसकी उस पर्सनालिटी से डिसएग्री लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशंस में हो, मीटिंग्स में हो, तो जो इसमें एक और भी स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी, इफ आई कैन क्विकली गो देयर और वी कैन टॉक अबाउट इट विद ओके। सो यहाँ पर है कि रेलेवेंट रहें आप। आपने नो साइड कॉन्वर्सेशंस और कमेंट्स करें। जब आप साइड कॉन्वर्सेशंस या इन जनरल ले जाते हैं गुफ्तगू को, तो अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट, जिस बात के लिए आप इकट्ठे हुए हैं सब, जिस बात को या प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए, तो वो जो साइड कॉन्वर्सेशंस है और उसके बाद जब आप डिसएग्री कर रहे होते हैं तो उसमें देन पीपल एक्चुअली गेट दैट। बट जब प्रिसाइज और ब्रीफ रहते हैं सब्जेक्ट के ऊपर ही, तो और जब आप वहां पर डिसएग्री करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ये चांस होते हैं कि अगला यही परसीव करता है कि इट्स एक्चुअली अबाउट द सब्जेक्ट। थैंक यू। आई थिंक Right. further, Thank you. if Shahid, you can share our email details and the contact official details, so if anyone further has any questions या detail में बात Yes. करना चाहें, they can always contact us। Right. We can move on to the next questions. We have a question from Muhammad Akil Mazhar. Akil जी, wants to know the techniques he should be practicing to improve interview skills. okay। The techniques,
First of all is that whatever you write in your resume should not be should be what actually you are in real. Most of the time जो बने हुए रेज्यूमे या सीवीज होते हैं वो खुद से नहीं बनाए गए होते हैं, उसमें इवन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से लेकर अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन जितनी भी चीजें लिखी गई होती हैं वो कॉपी पेस्ट होती हैं या किसी फ्रेंड या दोस्त की. सो फर्स्ट रूल इज दैट मेक योर सीवी और रेज्यूमे खुद बनाएं और उसको बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक रखें जो आप असल में हैं. बिकॉज और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट फ्रेमवर्क जो फॉलो करना चाहिए. There is nothing right and wrong formula in making a CV or resume. Just write in your resume who actually you are, and don't take help and guidelines from the good CVs around you. आप उसे टिप्स जरूर लें, इवॉल्व जरूर करें अपनी CV को, लेकिन उसके अंदर लिखा गया हर लफ्ज खुद लिखें, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और ये सारी चीजें. और don't make it drag otherwise. For example, which things are very obvious and you completely write in detail. होता यह है कि जब वो रेज्यूमे एम्प्लॉयर के सामने आता है और जब आप फिजिकली सामने होते हैं तो एक रेज्यूमे भी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और आपके बारे में ऑलरेडी परसेप्शन क्रिएटेड होती है. एंड व्हेन यू आर फिजिकली देयर इन रियलिटी और जब आप वो असल में नहीं होते जो आपने लिखा होता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन जो है आपने अवॉइड करना है. और दिस इज द की यू नीड टू कीप इन माइंड. थैंक यू. Right. Muhammad Usman is asking that can we improve confidence by practicing faking it? Actually, confidence is actually the reflection of your values. Confidence is actually is believing in what you do. आप इस चीज पर यकीन रखते हैं कि जो आप कर रहे हैं इज द राइट थिंग एंड इज द बेस्ट थिंग एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग द डिफरेंस. मैं जो करने जा रहा हूँ कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए है, ऑप्टिमिस्ट हूँ मैं इसको लेकर, और जब मैं इसको डिलीवर कर दूंगा तो ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा. इस चीज पर यकीन रखना और इस चीज को लेकर पॉजिटिव रहना और इसके थ्रू कंट्रीब्यूट करना, इस सारे थॉट प्रोसेस को अपनी बॉडी लैंग्वेज में रखना और इसको लेकर चलना और उस पर कायम रहना, इस चीज का नाम है कॉन्फिडेंस. कि आप मिसाल के तौर पे कि मैं फॉर एग्जांपल अच्छा लग रहा हूँ, सो मैंने जो परफ्यूम लगाई है इट स्मेल्स गुड, ये एक अच्छा इंप्रेशन दे रही है. सो इट्स नाउ अ थॉट प्रोसेस. नाउ बिलीव इन इट that what you are actually saying you also believe in it. So आपके जो अंदर है जो थॉट प्रोसेस जिसको आप इस फ्रेमवर्क को अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, आप फिजिकली भी उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जी. Thank you, Asad. Umair Irfan has a question around how we can sell ourselves, whether during a job interview or a meeting negotiation. आई थिंक ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि बेसिकली सेलिंग किसी एक पर्टिकुलर लाइन का नाम नहीं है कि हम कैसे. हमने यहाँ पे काफी सारी चीजों की बात की. व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, आप छोटी सी एग्जांपल लें. व्हेन यू आर आउट, जब आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी चीज सेल करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेल योर कार, व्हेन यू आर आउट टू सेल योर कार, व्हाट यू डू, you should know about your car, the engine, the condition of your car, market के अंदर उसकी क्या प्राइस है, the knowledge around it, around the price, market price, condition, physicality, उसके features, सारी चीजें. So there is a working around it actually, so that when you are actually prepared, so आप जब जिस मीटिंग में जा रहे हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप होना. आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप किस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं उस एम्प्लॉयर को पढ़कर जा रहे हैं. जिस एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेने वाला है अगर आप उस पर्सनालिटी को जानते हैं, लिंक्डइन पर उसकी प्रोफाइल पर्सनालिटी रीड करके जाएं, उसकी पूरी जर्नी को समझ कर जाएं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉन कोई भी एंकर की पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेता है, so he goes prepared, he gathers all the relevant information around that thing. So इसी तरह से when you are actually negotiating, so negotiation के अंदर एक बड़ी important चीज है get to know about the other side, not only in terms of के but also the emotion, उसकी personal side को बीट करके जाए. अगर आप किसी MOU या एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो यू नीड टू सी कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेस है, पूरा एक स्पॉट एनालिसिस करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना वर्क अराउंड कंप्लीट करते हैं, मीटिंग्स के इर्द गिर्द सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको वेल इक्विप्ड रेडी होकर जाते हैं, सो यू आर एक्चुअली देयर फॉर द राइट सेलिंग, इवन द नेगोशिएशंस एंड इन द मीटिंग्स एज वेल. जी. Right. Muhammad Naeem has a question that he gets to have kind of opportunities on different basis, but he wants to know that if he gets an opportunity to change his job, but when he changed the job and he has done it before, it doesn't give him a satisfaction compared to the previous job he was doing. So he wants to know from your end that he should either he should be going for such opportunities or he should not. देखिए, you should always be looking for better opportunities in your life. There is no doubt on it. But first, see what you are doing right now. Are you doing that? Are you delivering that completely? Or are you doing justice to it? Are you actually satisfying yourself in that current position? ये बहुत important है समझना कि where your substance stands, where your knowledge stands. And if you believe that you are ready for the next step, then go for it. हमने एक बात की थी ना that you need to be preparation meets the opportunity. So are you prepared enough for that next step? If you are prepared, then you need to believe in yourself and take that step. People around you can guide you, can motivate you, can give you inputs, but at the end of the day, you need to be sure about yourself that are you completely aware about what you are going to do next? Have you the complete information around that? Are you experienced enough for that position? So gather all those things, bring them together, and then take a decision. Right. There are few few of the attendees have asked one question around the session contents and recording. Just to let them know that both of these items, including the recordings, will be shared with them after the activity. So Asad, this is all from the Q&A side. So over to you now. Thank you very much, everyone, for attending this session. And thank you very much, Shahid, for supporting me with the questions today, and Rashid for always for your excellent support. I must tell all the attendees in the session that Rashid is the one who actually put all the great effort and making this possible today. So inshallah, stay in touch. There are 5 more sessions to go. Different perspectives, मजेदार किस्म के कुछ subjects हैं, नई appetite आपके लिए लेकर आ रहे हैं, so you love it. So stay in touch and thank you very much.